The term antibiotic was discovered by Willemin for designating the compounds which are involved in the process of antibiosis. Means the process of antibiosis means to oppose one living microorganism, means opposition of one living microorganism by another. So antibiotics are microbial metabolites which in relatively high dilution may inhibit the growth of microorganisms. So antibiotics are derived from microorganisms and they are formed during different metabolic processes. So in very high dilution we can use these antibiotics to inhibit the growth of other microorganisms. So a scientist named Waxman told that antibiotic is a substance which is produced by microorganisms and which has capacity of inhibiting the growth and even destroying other microorganisms. So it is produced by a microorganism and it is used for killing another microorganism. So it is a chemical compound which is derived from a living organism, means microorganism, and in small concentration we can use this for inhibiting the life processes of microorganisms, means inhibiting the growth of microorganisms and even killing them. अब इसका लेटेस्ट वर्जन क्या आया है, जो एंटीबायोटिक्स सारी जो डेफिनेशंस हैं वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. मींस माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स हैं ये, या उसके सिंथेटिक स्ट्रक्चरल एनालॉग्स भी हो सकते हैं. मींस दीज आर कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इनसाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इवन वी कैन सिंथेसाइज दीज कंपाउंड्स इन आवर लैब्स. मीन्स दे आर एनालॉग्स. एनालॉग्स मीन्स उनसे मिलते जुलते, जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं उनसे मिलते जुलते कंपाउंड्स हम लैब्स में भी बना सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इंस्पायर्ड बाय देम. मीन्स जो हम लैब में बनाएंगे स्ट्रक्चरल एनालॉग्स, दे विल बी इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल एंटीबायोटिक्स. So we can use them in small concentration and they are capable of inhibiting growth and survival of microorganisms without causing any serious toxicity in the parent host. So these are antibiotics, different definition of antibiotics and latest version of definition of antibiotics. Next is classification. So we can call different antibiotics as antimicrobials. Means it will also include antifungal, antiviral. So one category of antimicrobials is antibiotics. So we can classify antibiotics depending on their chemical structure, mechanism of action and effect on bacteria. So first category is according to chemical structure. सो केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट बहुत सारी इसमें कैटेगरीज हैं. सो फर्स्ट इज़ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हमने पढ़ने हैं. ठीक है, फर्स्ट जो यूनिट फर्स्ट में जो भी हमें टॉपिक पढ़ना है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से है. देन अमीनोग्लाइकोसाइड्स, देन टेट्रासाइक्लिन, देन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, पॉलीइन एंटीबायोटिक्स, क्विनोलोन्स, oxazolidinone, sulfonamides, diaminopyrimidine, nitrobenzene derivative, nicotinic acid derivative, lincosamide antibiotics. Next, according to mechanism of action, I have not given the categories of antibiotics, but how these antibiotics are going to act, we will study. So फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया. तो इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया क्या हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है. मीन्स दीज एंटीबायोटिक्स विल inhibit the growth of bacteria, then they will be called as statics, means bacteriostatics. If they are going to inhibit the growth of bacteria, then the antibiotic will be called as static. Static means growth को रोक देना. Then cidal means to kill. तो अगर वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज साइडल. तो स्टैटिक्स में आते हैं क्लोरमफेनिकॉल, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, ऑक्साजोलिडोन. देन साइडल में आएंगे बीटा लैक्टम, मेट्रोनिडाजोल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, वैंकोमाइसिन. देन अनदर कैटेगरी इज स्टैटिक स्लैश साइडल. ठीक है, तो
तो कम कंसनट्रेशन में हम उसको एज ए स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं, एंड इन हाई कंसनट्रेशन वी कैन यूज़ दी ड्रग्स एज साइडल. So these are macrolides, lincosamide and beta-lactam antibiotics. So this is all about effect on bacteria. Then we will discuss different mechanism of action. So these antibiotics can inhibit cell wall synthesis. They can cause leakage from cell membrane. They can inhibit protein synthesis. They can cause misreading of messenger RNA code and affect permeability. Next, they can inhibit DNA gyrase. They can interfere with DNA function. They can interfere with DNA synthesis. Then at last they can interfere with intermediary metabolism. So ये सब करके वो क्या करते हैं, सिर्फ सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पूरा बैक्टीरिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. So these are mechanism of action. In next video we will discuss about beta-lactam antibiotics. Means we will start beta-lactam antibiotics. So that's all for today. So वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.